Welcome! Welcome to the stream, you all. Let's fucking go. मेरे को मेरे एक आदित्य भाई ने एक रिकमेंडेशन भेजी थी आज, और उसने बोला था कि ये रहा कंटेंट, तो आज हम ये देखने वाले हैं. My guy best friend cheated on his girlfriend with me. Let's see क्या हुआ है भाई. किसी के गाय बेस्ट फ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पे उसके साथ चीट कर लिया है. 3 घंटे 25,000 व्यूज आ गए, 5 लाख तो सब्सक्राइबर. ये somebody fuck me in my ass, somebody raw dog me dog, somebody butt me please. गाजर गन्ना कुछ उठाओ और मेरी Let's check it out. I have been a girl best friend to my guy friend, and I have caused a lot of problems in his relationship, which I'm going to share with you guys today. भाई जिस हिसाब से हंस रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इसने कुछ गलत नहीं किया होगा, क्योंकि अगर इसने कुछ गलत करा है और फिर ये ऐसे बोल रही है ना, तो जो दिक्कत की बात है भाई. I was in school. So one day what happened, I was standing with my friends outside the van. It's this tall, cute guy who bumps into me. Like, he leaves without even apologizing. And I'm like, excuse me, at least have the... Excuse me, मुझे आपसे प्यार हो चुका है. What the fuck? आपने मेरे साथ straight up बदतमीजी करी. I'm in love with you, man. What the fuck? He's nonchalant like that. A message on Facebook from a random guy saying, I'm so sorry for what happened today. Facebook? कौन से जमाने की बात है भाई ये? Let's call him Rohan, okay? I was in an all-girls school, but even Rohan was in an all-boys school. So the van that I used to take to go to school and come back was a co-ed van. So, माँ बाप की सारी मेहनत पे तो मूत दिया पर इनने ये करके. भाई माँ बाप अपनी लड़कियों को क्यों भेजते हैं गर्ल्स स्कूल में? ताकि बहनचो ऐरे गहरे छिछोरे उनके पास ना आ पाए, जो कि किसी काम का अटेम्प्ट नहीं है. वो फिर भी आ ही जाएंगे. इंसान हमेशा तरीके ढूंढ लेंगे करने के. पर लेकिन ये करके तो उनने क्लियर ही मूत दिया, कोविड वैन दे दी. तो बहनचो हो ही गया ना, जो इंटरेक्शन होना था वो तो हो ही गया. He and I became really good friends, and we did become each other's good best friends. They become each other's good best friends, by the way, y'all. ठीक है, good best friends. You guys started to catch feelings for me, and here's the thing, I liked him too. Okay, Of course you did, bro. Also, Crazy. I was very scared of getting into a relationship with this guy. Come on, yaar, I'm 13 years old, and oh hell nah, bro. What the fuck? Okay. And I kept him in the friend zone. Like constantly, I would keep calling him my best friend. Being in the friend zone, he confessed his feelings to me. Oh hell and nah. I told him, no, I will not get into a relationship with anyone because I'm नाच क्यों रही है? ये नाच क्यों रही है? ये बोलते हुए get into ये a नाच क्यों relationship रही with है anyone भाई? because I'm ये not. नाच क्यों रही है? ये नाची क्यों? भाई लड़कियां ऐसी बातें करते वक्त भाई नाचा तो मत करो भाई. कम से कम ऐसी बातें करते वक्त एक्टिंग ही कर लो भाई. एक्टिंग कर लो थोड़ा ऐसे होने की कि नहीं यार ऐसे झूठा ही. मुझे पता अंदर से नहीं महसूस हो रहा, झूठी दिखा दो यार कम से कम. Since I kept rejecting him so many times, he finally decided to move on and start dating someone else. I'm going to call her Sonia. अब आ गया है कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट. ठीक है, अब वो लड़की आ चुकी है जिससे सारे लड़के रिलेट करने वाले हैं. वो लड़की भी आ चुकी है जिससे कुछ लड़कियां रिलेट करने वाली है. अब वो टाइम आ चुका है भाइयों. तुम जिस भी दल के हो, तुम्हारी बारी आ चुकी है भाइयों. आ जाओ. I just couldn't stand the fact that my guy best friend had a girl in his life who was as important to him as I was. The Sonia girl was in my school. Every time she and I would see each other in school, I would just give her the death stare, like stay away from my guy best friend. Like I was an absolute to her. She would constantly fight with Rohan because of me. So because of me, there were a lot of problems that were being caused in their relationship. अभी भी होने वाली है कॉज. करंट रिलेशनशिप में भी होने वाली है. And I would tell him stuff like, oh my god, why are you with Sonia? You deserve so much better. Why is she so insecure? कोई बात नहीं यार, पर कोई बात नहीं. I don't hate her man, you know. I can understand. हर इंसान की जिंदगी में एक नीच फेज आता ही है जब वो कोई नीच हरकत कर देता है. बस मैटर ये करता है कि तुम रियलाइज करो कि तुमने नीच हरकत करी है और तुम आगे बढ़ो उससे, है ना? Yeah. And that's when I told him, maybe you don't have to get over me after all because I also like you. बस कुछ चीजें सुन के दर्द होता है भाई. कुछ चीजें सुन के दुख जाता है भाई. कुछ चीजें सुन के बस ऐसा लगता है can someone just like put a bullet through my... Decided to tell him that I like you and I don't want you to be with Sonia. I want you to choose me.
that yes, I have feelings for you. He dumped her. He broke up with her. So we started going out, but then I wouldn't give him the title of my boyfriend. बताओ भाई क्या है भाई? It's straight up niche, man. Straight up niche, dog. Since what me and Rohan had wasn't really serious, he started seeing somebody else. Let's call that girl Janvi. So when Rohan started dating Janvi, he called me up and he told me, Ayman, I'm dating Janvi and she's a great girl. I really like her. अगर इस लड़की ने इस चीज को fuck up कराना भाई, On me. और वो लड़का भी मादर चोद है फॉर टेलिंग हर ऑल ऑफ दैट, यू नो. वो कहीं ना कहीं एक गेट बैक करने का अटेम्प्ट तो था, ये रिवेंज लेने का अटेम्प्ट तो था ये, है ना, कि ये कुतिया जिसने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया, मुझे वो कहीं और से मिल गया है, तो अब मैं इसको जलाऊंगा. Because I couldn't take it, I started distancing myself from Rohan. After 1 year of him being with Janvi, I was like, okay, I think I'm finally over him. So we decided to meet. Meet again. डर लग रहा है, अब डर लग रहा है. This is where things get spicy. No man, do not let them get spicy. And since he was opening up to me so much, I'm like, why are you even with her? Honestly, you deserve so much better. TSPMO. And then he's like, I mean, honestly, you're one girl that I wanted to date and you're just not dating me. And then I go, इसका सर फट जाए, इसका सर फट जाए भाई, मैं चाहता हूँ इसका सर फट जाए भाई. but you have a girlfriend now, like how can you date me? And then My heart aches. My heart aches. My heart fucking aches. It hurts, man. It hurts. and then he's like, I mean, if Janvi wasn't in my life, then would you date me? And instead of just giving him a direct answer, I'm like, I don't know, maybe. बाप रे, कोई इतना कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकता है? ये रेप्टिलियन है भाई, ये रेप्टिलियन है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है ब्रो. होल्ड द फक ऑन ब्रो, शी इज अ फकिंग रेप्टिलियन. आई एम टेलिंग यू ऑल, शी इज अ रेप्टिलियन. ये एक रेप्टाइल है, इसके अंदर इसका ठंडा है, इसका खून ठंडा है. हंस कैसे रही है ये, हंस कैसे रही है भाई? I'm like, I don't know, maybe. And then the attention. I loved the attention I was getting from him, even though he had a girlfriend. Was making me feel very validated. It made me feel like, wow, even though he has another girl in his life, he still wants me. Wow. क्या हुआ था भाई? पापा ने प्यार ही नहीं दिया क्या? जब पापा को हक करने जाती थी, पापा चाय फेंक देते थे क्या इसके ऊपर? पापा न्यूज़पेपर और चाय लेके बैठे होते थे, ये हक करने जाती थी, पापा ऐसे चाय फेंक देते थे. क्या होता था भाई? लड़के की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी क्या बहनचो? तुम इतने कितने चूतिए हो भाई, तुम इतने कितने चूतिए हो? तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ चोद रहे हो, तुम एक दूसरी लड़की जो जेन्युइनली तुम्हारे लिए अफेक्शनेट है, तेरे से कमिटेड है, जो जिसने अपनी कमिटमेंट तुझे दी है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तू खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तू क्या कर रहा है भाई? When I got into a co-ed college, and in that co-ed college, within the first 2 weeks, I found a guy and I eventually started dating the guy as well. Oh my god, bro. When I told Rohan that I got into a relationship with a guy in college, he was shocked. He was like, why, Ayman? Why are you in a relationship? What about us? What about us, bro? You're chopped, motherfucker. So I used to talk a lot about Rohan to my boyfriend. And my boyfriend was extremely possessive about me. He was extremely insecure and ये लड़की तो सबकी बहन चोद रही है यार. Wow. Possessive about me. So one fine day what happened, he called up Rohan. My boyfriend called up Rohan and I was on conference. I could hear the whole conversation. Wow. And guess what? Rohan tells my boyfriend that, yeah, bro, I'll stay away from Ayman. She's like that only. Or she's like this, she's like that. Basically, he's bitching about me. हाँ तो क्या गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है? आके क्या फाड़ रही है अपनी? पीछे हट. My guy best friend is speaking shit about me to my सही कर रहा है. boyfriend. सही बॉयफ्रेंड से सही कर रहा है. समझी साली? रेप्टिलियन हट जा. And that is when I lost my shit. She lost her shit. She lost her shit. I just couldn't take it and I just wanted to take revenge somehow. Fuck. I texted Janvi
Okay, Rohan's current girlfriend. I texted Janvi and I told her everything. Your boyfriend used to come to my apartment. Oh my god! They broke up. After that day, me and Rohan are not friends anymore. Oh He broke up my with Janvi. God. I continued dating my college boyfriend, and yeah. भाई वीडियो के स्टार्टिंग तक आई वाज लाइक कि ब्रो शी इज लाइक सबके साथ होता है भाई, द गुड पार्ट इज कि आप समझो और आप उभरो, बट ये तो स्ट्रेट अप नीच इंसान है भाई, ये तो खतरनाक इंसान है। आर्यन भाई, मेरे भाई जिसने मुझे इस वीडियो की लिंक दी है, भाई तू मुझसे दूर रहा कर, तूने 2-3 लिंकें और दे दी, ऐसी मेरी नस फट जाएगी भाई, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, दुआ अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी।